Hey guys, Rom Gurji here, back with another video, and this time we are talking about Origin OS again. No, wait, it's already launched. And as I told you, as I promised, I'm here to tell you much more about it as the launch was in Chinese, so I'm here to simplify your life for you. But before I do that, if you're new here and you have yet not subscribed, please go down to the red button, subscribe right now because I'm going to give you some really nice updates. राइट सो दैट आउट द वे लेट्स टॉक अबाउट दिस बट फर्स्ट अगर आपको ये वीडियो हिंदी में देखना है तो नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प पे जाके आप ये वीडियो हिंदी में भी देख सकते हैं सो टॉकिंग अबाउट ओरिजिन ओएस गाइज आई एम गोइंग टू ट्राई एंड कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल एज quick as possible because it was a very long launch. It was predominantly in Chinese, so I sat through the whole thing, got the main points out, and I'm not sure if you can see or not, this page is filled with all these main points plus a little on the back. So yeah, it is a huge launch, and I'm going to skim through it, tell you the main points, and that is why I have this paper here because there's so many features that I need to talk about, right? So we'll just get started and I'm going to try and explain it to you as quickly as possible, right? So firstly, let's talk about the design idea that the company has launched this with. Let me tell you about the design idea that the company has launched this with. The design idea is simple. They're going to focus on nature and naturally occurring things. So whatever parts of nature that you actually see in life, they're going to focus on that. They're going to imbibe that in the design of the OS, which I believe is a very interesting thing to do. Also, they're going to focus on minimalism. So right, so they are going to focus on minimalism. They're going to cut the clutter out. So they're going to make your life much more easier. Now, how are they going to do that? They're going to make a new minimal always on display, which is going to have something known as nano notification. So this is something they talked about. So we know that the notifications just pop up really huge everywhere. So they are trying to declutter it. They're going to make the notifications minimal, the icons better for the notification. And in fact, you're going to get these dynamic widget kind of icons on your home screen where you'll get the whole notification as a slide. So it's really nice to see what they're doing with the whole thing. The layout is based on a Chinese grid. So now this Chinese grid is actually based on a game. So it is very interesting to see that they followed this design through. And this allows you to set your home screen in a certain way, which I find to be very cool because you have these 3D icons which can be customized, changed, and which allow you to get a lot of information without actually entering the application. So I really like that. Now another thing they're adding is Nano Music Player. So Nano Music Player is a good concept, a concept that I wish was coming to normal Android too because it's very interesting. So what happens is basically you have this beautiful widget on your home screen which allows you to play music. Now this widget itself has this 3D disc-like structure that shows which song is playing, and it looks really cool and really nice. Moreover, it's very functional and it looks crisp. Also, Origin OS allows you to change the music player in this, which is something that I have not seen before for a default player widget. So it's really nice to see what they've done here. Now after this, we have something known as a Nano Kit. So the Nano Kit basically means it's a move to their minimalism. Again, the icons are going to be smaller. It has a new icon design and the icons are basically based on what you see in your daily life, right? And the icons are actually extremely dynamic. So your weather icon will keep changing according to your weather. Let's say you have an icon just to show you notification, by the way, that is available. So that icon will just keep updating you with the current notifications and so on and so forth. And with each size of the icon, the information the icon displays changes more and more. So that's really nice, and they have this 3D pop-up menu also with these icons, which is really helpful and you can see in custom launchers. But for a company to introduce this, I loved it. They have something known as a parallel world function. So the parallel world function basically means that you can switch between a stock Android layout. So the stock Android layout is going to have a typical stock quick settings, it's going to have a typical stock launcher. Everything becomes your normal stock, right? And if you switch it back to Origin OS, you get this colorful, dynamic Chinese grid kind of a layout. So it's really interesting to see how they've done that and how they'll be doing that. By the way, looking and judging from this, it is going to be a very huge update. So I hope it does not break people's internets back, right? After that, it's going to have a new recents menu. So they're going to have a really refreshed recents menu. Right now the recent menu seems pretty old and dull, so they're going to have a very refreshed recents menu, and the recent menu is actually going to be extremely smooth
And usually when you see that the text above the recent menu, the title of the windows, it does not move properly or naturally that way. It's not very smooth. They've made it very smooth. This is not a very significant thing, but this will make your life better. And for all those people who feel like they have OCD or something, trust me, right? And I'm not making fun. A lot of people have OCD about icon settings. I do too. And they're going to have a good time with it, right? Because there is a very strict grid being followed, which I really like, right? After that, there is going to be a small access panel. It's something very origin based. It's called a super pocket widget. So the super pocket widget is available on your lock screen, is available on your launcher, is available in your apps. And the basic thing that this super pocket does is it allows you to carry your basic functions related to payments, authorization, address, etc., right on your phone. So the chances are this might not come to India, being very honest, because all these payment features don't really come to India as they're well integrated with WeChat, etc. in China, but with India it's a bit problematic. So these usually don't come to India, but we'll see what happens, right? And after that, there is a direct lens access icon, and this icon is based on actual lens of cameras, those white lenses that you see, which are really cool. So they're going to create that in the icons. So it's really nice to see, it's really aesthetic to see, and it means now you can place the small shortcuts to your lenses directly. So you can place a shortcut to your telephoto lens if you are someone who uses his telephoto lens quite often, or if you're a photographer and you constantly keep changing lenses, or you just see something and you want to capture it but don't want to keep switching the lenses and wait for it to come. You are now going to directly have an access to all the lenses there are. After that, there are 3D icons. So let me help you with this. Now you see, if you hold a camera in your hand, you're going to have a very 3D look to it. You're going to know that there is depth and height, right? But when you see your phone, usually the icons are flat, like they're down, flat, and they're not very dynamic. Here, the icons are dynamic, they're 3D. So they're trying to add a certain depth to the icons, which I really personally find exciting and nice. And moreover, this is not just having a 3D icon. The 3D icons are dynamic in nature, therefore their animation will change based on what you want, right? So let's say you're thinking of a camera icon, and you zoom it up, right? You make it bigger, then the information that camera icon displays in that 3D becomes better. So obviously it is difficult to understand. The easiest app to explain this is with weather. So the weather app looks like a cloud, right? And there's sun and etc. And the whole dynamics of this icon change. And remember, the weather app icon is actually 3D. The whole dynamic changes. So if it starts raining, the whole icon becomes all rainy and gloomy. So yeah, it is a very interesting take on how icons react to real world, right? The clock design has very minimal look now. So the clock is very minimal looking. It's just a big circle with one hand rotating about. So I like the fact that they're going minimal, but somewhere it might become too minimal is what I fear. But it's still very interesting to see, still very nice to see. Now there is an option to ultimately customize your whole thing. So you can arrange the grid of your home screens, you can arrange the size of your icons, you can arrange the depth of your icons, you can arrange the feel of your icons. So they have a few mood settings where your icons react to how mood might be depending on whether it's rainy or sunny or winter. So you can add that depth to your icons. You can even switch them back to your normal stock look. So the amount of customization you can have, you can actually decide whether you want them to be colorful or not that colorful, whether you want them to be big or small. All of these decisions are on you. So it makes customization more fun and interesting, which is something I do like. After that, we have something known as weather graphs. So right now the weather app basically shows you the weather and the sun's movement all that much. But now the weather will show you the graph, like how the weather has moved over the day. Talking about the weather, it's going to have weather inspired wallpaper, which is something I am really excited about. So this is not your run of the mill, right? So this wallpaper also has type. One of them is where your current wallpaper becomes like the small photograph. So let's say this is the paper, this is your wallpaper. So it goes in the back of your screen. The screen gets covered in one pastel color, and that pastel color has shadows depending on how the weather is right now around you. Also, you can select the option
of whether it's rainy or summer. When you select that, the lighting moves that way on that pastel wallpaper to actually give you the feel on how lighting would be in actuality around you. So that is something very interesting. Moreover, there's this weather wallpaper where the wallpaper is your weather. So let's say it's raining, your whole phone has this rainy, gloomy touch, which I really love. Whether when it's sunny, it has this very fun, sunny vibe. So I really like that. The customization on wallpapers are plethora, and there are so many combinations to it that it's amazing. I like the sun one the best, the one I told you about, where it just mimics the sun, and you have this small light at morning. By the evening, it's that golden hour look. So I really like all that. Then there is a navigation gesture customization option where you can customize each and every part of the navigation gesture to your liking. So I love that, and that allows you to customize your phone so much that it's very, very interesting to see. It also has one hand usage speciality. So now they're going to have something for one hand users where you can minimize the whole screen in one go. So I really like that too. And there's also a blooming effect wallpaper. So I'm sorry I forgot to mention this earlier, but this is very interesting. They have these 3D models of all the flowers around, and these 3D models, you set a certain timer, and after that timer they'll bloom fully. So you see the flower from its early stage to blooming. It's really beautiful. These wallpapers are really well curated and really nice to see. So guys, this was basically what they told in the Origin OS launch, and they did not tell when it will actually reach the users. It's known that on 23rd November it's launching in China, users will start receiving it, but there is no more information on when and whether it's coming to India. So stay tuned for that. We're trying to talk to IQOO officials and see what's happening, so we'll know soon about it. That was all for this video, guys. If you did like the video, please like, share and subscribe, and well, let's move to the Hindi version. हे गाइस, कैसे हो? तो आज मैं आपके लिए जैसे प्रॉमिस किया था ओरिजिन ओएस का जो लॉन्च हुआ है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लाया हूँ. तो ये काफ़ी बड़ा लॉन्च था, 45 मिनट्स का लॉन्च था, पूरा चाइनीज़ में था. तो बैठ के मैंने काफ़ी पॉइंट्स लिखे हैं. ये आपको दिख रहा होगा, इतने बड़े पॉइंट्स हैं. अगर आपको दिख नहीं रहा है, पूरा पेज भरा हुआ है जो चेंजेस है उसके साथ. तो मैं आपको जितना हो सके उतना क्विकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. और इससे पहले कि आगे बढ़ें, आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशन आने वाली है. कब आने वाला है, कैसे इंस्टॉल करना है, सब आने वाला है. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और शुरू करते हैं. तो मैं जितना जल्दी हो सके ट्राई करूँगा. तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कंपनी की आइडिया क्या है इसके बीच में. तो वो एक नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. जो आप एवरीडे लाइफ में चीज़ें देखते हैं, उससे जो थीमिंग है, आइकन्स है, उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है. तो जितना रियलिस्टिकली आपको रियलिटी के पास ले जा सकते हैं थ्रू योर कस्टमाइजेशन और वो आइकन सेटिंग्स के साथ, तो वो आपको एक कोशिश कर रहे हैं. दूसरा जो लेआउट है, पूरे ओएस में जो लेआउट है वो एक चाइनीज़ गेम जो है उसके ग्रिड पैटर्न पे बेस्ड है. तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक होगा कि कैसे आप वो सिमेट्री में कस्टमाइजेशन कर पाएंगे, और इनके हिसाब से आप बहुत कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जो मेरे हिसाब से बहुत एक बढ़िया चीज़ है. इसके साथ जो नोटिफिकेशन पैनल है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, कंट्रोल सेंटर, वो सब चेंज हो गया है. वो बहुत ही प्रिटी हो चुका है, बहुत कलरफुल है, प्लेफुल है. तो देखने में बहुत अच्छा लगता है. जो टॉगल्स हैं उनमें एक नई स्टाइल आई है जो मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग है. इट इज़ अ गुड टेक. तो इसमें जो एप्पल के डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो क्लियरली दिखते हैं. इसके बाद एक म्यूज़िक का नया प्लेयर का विजिट आया है, नैनो म्यूज़िक प्लेयर बोल के, जिसमें वो जो म्यूज़िक प्लेयर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है. एक काफ़ी अच्छा दिखता है ये म्यूज़िक प्लेयर. और इसमें आपको एक 3D डिस्क मिलती है जो प्ले होती हुई दिखती है, और उस पर आपका म्यूज़िक वगैरह सब लिखा होता है. तो जो लुक एंड फील है वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लुक एंड फील है. बट इसमें आपको एक और एक्सेसिबिलिटी की चीज़ मिलती है कि आप अपना म्यूज़िक प्लेयर भी यहीं से चेंज कर सकते हैं. तो आपको ज़्यादा होम स्क्रीन में जाने की ज़रूरत नहीं. तो जो इनका एक कॉन्सेंट्रेशन है वो मिनिमलिज्म की तरफ है, जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम से कम चीज़ों में मिल पाए. तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है. इसके बाद आते हैं जो आइकन डिज़ाइन है, उसमें एक नैनो किट नाम की चीज़ आई है, जहाँ पे एवरीथिंग इज़ मिनिमलिस्टिक. छोटे छोटे चीज़ों में उन्होंने बड़े बड़े चेंजेस किए हैं. तो जो आइकन है वो रीडिज़ाइंड है, 3D आइकन है. इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. जैसे आप इनको रीसाइज़ करोगे, जितनी इनकी साइज़ होगी उतनी ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेंगे, जो मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग है. और ये एंड्रॉयड नॉर्मल पे भी होना चाहिए, बिकॉज विजेट्स जो हो गए हैं वो अभी काफ़ी रिडंडेंट हो गए हैं. ये जो है इसमें आपका विजेट और आइकन
सर्व कर रहा है, जो मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें एक पिक्चर इन पिक्चर मोड भी आया है जो काफ़ी कूल लगा मुझे, जहाँ पे आप वीडियोस वगैरह पिक्चर इन पिक्चर में देख सकते हैं, जो एंड्रॉयड में पहले से ही था बट इन्होंने अब फाइनली इंप्लीमेंट ठीक से कर दिया है। इसके बाद पैरेलल वर्ल्ड फंक्शन है, जहाँ पे आप ओरिजिन ओएस के लुक और स्टॉक एंड्रॉयड के लुक में स्विच कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड वाला लुक लेंगे तो सब आपको स्टॉक एंड्रॉयड जैसा दिखेगा, चाहे वो आपका लॉन्चर हो, चाहे वो क्विक सेटिंग हो। पर जैसे ही आप ओरिजिन ओएस में स्विच करोगे, आपको एक कूल ओरिजिन ओएस वाला लुक आएगा जो बहुत प्यारा लगता है। तो आपकी चॉइस है, आपको ये चाहिए वो चाहिए, बट आपको एक चॉइस मिल रही है, जो मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है। इन्होंने एक नया रिसेंस मेन्यू भी लाया है जो बहुत ही बढ़िया है, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। और एक चीज़ जो इन्होंने की है, जो हर टच पे जो आइकन्स हैं वो एक तरह से बाउंस होंगे। जैसे अगर पानी में आप कोई चीज़ रखते हो और उसको टच करके थोड़ा पीछे कर लेते हो तो वो अंदर जाती है और बाहर आती है, बॉयंसी जिसे हम बोलते हैं। तो वो हो रहा है, जो एक बहुत छोटा टच है बट थोड़ा इंटरेस्टिंग सा टच है। रिसेंट मेन्यू में भी ये ऐसा एक एनिमेशन आता है, जो ये एनिमेशंस हैं उन्होंने बहुत इंप्रूव किए हैं। रिसेंट मेन्यू की एनिमेशन भी काफ़ी स्मूथ किए हैं। इसके बाद एक स्मॉल एक्सेस पैनल आता है हर जगह, जिसे हम सुपर पॉकेट विजेट बोलते हैं। तो ये सुपर पॉकेट विजेट हर स्क्रीन पे अवेलेबल है आपके लिए। आप इससे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये बेसिकली इंडिया में आना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज इंडिया में यूजुअली चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके पेमेंट मेथड्स वगैरह नहीं आते हैं। सो टेक इट विद दिस विद पिंच ऑफ सॉल्ट, ये शायद ना आए इंडिया में। इसके बाद एक लेंस का डायरेक्ट एक्सेस के लिए आइकॉन्स मिलेंगे आपको, जिसमें बेसिकली लेंस बनाई हुई है आइकॉन पे, जो बहुत सुंदर दिखती है। एक रियल लेंस के फ़ोटोज़ लेके इन्होंने ये किया है, तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगा एज अ पर्सन जो फोटोग्राफी करता है उसको देखने में, कि इतने प्यारे आइकॉन्स उन्होंने लेंस के बनाए हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें। आपको जब अपडेट मिलेगा तो बहुत मज़ा आएगा आपको। इससे आप कोई भी लेंस डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे वो टेलीफोटो हो या मेन लेंस हो। आप डायरेक्टली क्लिक करके डायरेक्ट उस लेंस में ही अपना कैमरा खोल सकते हैं। इसके बाद 3D आइकन्स है, तो आपको एक बता दो, जैसे वेदर ऐप है वो 3D में दिखेगा, तो आपको एक बड़ा 3 डायमेंशनल में आपको एक क्लाउड फ्लोट करता हुआ दिखेगा। तो अगर सनी है तो वो सनी होगा, अगर वेदर आपका रेनी है तो उसमें बारिश गिरने लगेगी। तो बहुत सुंदर दिखता है, बहुत ही क्लीन और क्लियर लेआउट है, बट बहुत ही इन्फॉर्मेशन बेस्ड लेआउट है ना। आपको ये वंडर करना चाहिए कि इतनी सारी अगर चीज़ें चेंज होने वाली तो अपडेट काफ़ी बड़ा आ सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे तो अल्टीमेट कस्टमाइजेशन है। तो इसमें कस्टमाइजेशन है वो बहुत सारी की हुई हैं। आप अपने आइकॉन्स को कलरफुल, नॉन कलरफुल, वॉलपेपर को कलरफुल, नॉन कलरफुल, आइकन की साइज़ चेंज कर सकते हैं, आइकन का टाइप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ओरिजिनल टाइप का लुक चाहिए, आपको स्टॉक टाइप का लुक चाहिए, उसके बाद टेक्स्ट देखना है, टेक्स्ट नहीं देखना, तो आप पूरी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ की हुई है। उन्होंने फाइनली बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, और यूज़र्स को चॉइस देना एक बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। इसके बाद वेदर ऐप में काफ़ी चेंजेस आए हैं। वेदर ऐप अभी काफ़ी क्लीन और मॉडर्न दिखता है। इसके साथ इसमें आपको वेदर ग्राफ्स मिलते हैं, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। वेदर के बारे में बात करूँ तो वेदर बेस्ड वॉलपेपर्स इसमें बहुत है, जहाँ पे रेनी सीजन में अगर आप रेन हो रही है और आपका वॉलपेपर वो वेदर वाला लगा हुआ है, तो आपके फ़ोन में एक रेनी लुक आएगा, सारे आइकॉन भी उसी हिसाब से चेंज होंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि ये आपको एक बहुत ही करंट फील देता है। इनफैक्ट आपको वेदर जानने के लिए आपका वो ऐप खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ हम आते हैं 3D विजेट एनिमेशन। जो विजेट हैं उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन 3D में आएगी। इसी के साथ मैं बात करूँ तो एक मिनिमल नोटिफिकेशन नाम की भी चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, जहाँ पे नोटिफिकेशन बहुत छोटी साइज़ में आएंगे, बट आपको इन आइकन्स पे भी नोटिफिकेशन दिखेंगे, लॉक स्क्रीन पे भी दिखेंगे और ऊपर भी दिखेंगे। और ये बहुत मिनिमल होंगे, बहुत बड़े और मोटे से नहीं होंगे, मिनिमल होंगे, पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी देंगे। इसके बाद वेदर बेस्ड में और एक बात करूँ वॉलपेपर, तो एक स्मॉल वॉलपेपर टाइप है, जिसमें आप छोटे छोटे फोटोज़ में आपका वॉलपेपर कन्वर्ट हो जाता है। एक प्लेन पेस्टल कलर आता है पूरे स्क्रीन पे, और नीचे एक आपको वॉलपेपर होता है, उस पर आइकन्स आ जाते हैं पूरे इसमें। तो उससे होता ही है कि जो डिवाइस का लुक है वो एक फ़ोटो फ्रेम टाइप हो जाता है। और इसके साथ ये जो लुक है इसमें शैडोज़ और ये सब आपकी वेदर बेस्ड होती हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग दिखता है। ऑब्वियसली मैं इसको इतना जस्टिस बात करके नहीं कर सकता, तो काफ़ी एक सुंदर सा इफेक्ट आता है। इसके बाद सन एंड मून बेस्ड वॉलपेपर है, जिसमें एक बहुत रियलिस्टिक इफेक्ट है। तो आपका क्या होता है, इसमें आपका सन की जो पोजीशन है या मून की जो पोजीशन है उसके बेस्ड आपके वॉलपेपर का कलर चेंज होता है, डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज होती है, जो बहुत रियलिस्टिक है, अच्छा लगता है। इसके बाद एक ब्लूमिंग फ्लावर वाला भी इसमें वॉलपेपर दिया गया है, जो मेरे हिसाब से बहुत सुंदर है। आप एक टाइमर सेट करते हो और उस टाइमर तक पहुंचने तक वो फ्लावर स्टार्टिंग एज से, तो आपको इसमें फ्लावर स्टार्टिंग एज से ब्लूमिंग एज तक दिखाई देता है। बहुत इंटरेस्टिंग टेक है वॉलपेपर्स पे और बहुत सुंदर लगता है। तो गाइज़ ये सारे चेंजेस थे जो ओरिजिन ओएस में आ सकते हैं, और भी जितना मेरे को दिखेगा ऑनलाइन मिलेगा मैं आपको बताता जाऊँगा, बट ये ऑफिशियल लॉन्च में बताया था। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइज़।